Good morning students, welcome to your computer class. But in previous lecture, what we have done, we will continue with our chapter number 8 HTML, and yesterday means in previous lecture we have done that how we can modify some paragraph text with the help of few tags. Today we will do some more tags like your heading tag and formatting text. Formatting text means बेटा जो भी आप formatting, like if you want to write your data, write your text bold, italic, underline. In MS Word you can do easily. In HTML also you can do these things with the help of tags. How we can apply the tags for this and what is the output of this, I will show you the practical of HTML. That with the help of that practical you can do the how you can use tags for formatting the text or heading tag. Heading means headings होती हैं books may be in same chapter, in same book, than what you have seen. Few headings are smaller and few headings are greater. Then how you can use that size of headings with the help of tags, I will show you. Let's start our practical. We are going to do that. First we have to make a HTML program. I have already opened our notepad. आपको सबसे पहले what is your first फर्स्ट टैग आपको क्या यूज करना है HTML क्लोज एंड देन first HTML tag and then at the end it should be closed. Then after HTML, बेटा अब आप कहोगे कि मैम आज आपने डॉक टैग यूज नहीं किया बिकॉज दैट वन इज ऑप्शनल ओनली. वो आपका ऑप्शनल है, दैट्स वाई नो नीड टू यूज अगेन एंड अगेन. इफ यू वांट टू यूज फॉर डिक्लेरेशन देन यू कैन. इट्स योर चॉइस ओनली, इट्स डिपेंड्स ऑन you only. After HTML, head tag will be started and in between the head tag our title tag will be come. In title tag what we are going, I am going to write like heading tags आज हम कर रहे हैं, that's why I am going to write heading tags. Okay, and now title tag will be closed. Then after head tag, which tag you have to open? Body tag open, and where it should be closed? Just before closing of HTML tag. बेटा बिकॉज जो भी हम अपनी एडिटिंग कर रहे हैं, जो भी हम अपना टेक्स्ट वो यूज़ कर रहे हैं, वो किसके बीच में आता है? बॉडी टैग्स में. हेयर आई हैव रिटन ऑलरेडी फ्यू लाइन्स, मीन्स इट विल कम लाइक योर हेडिंग. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेडिंग टैग्स? जो हेडिंग टैग्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप्स के. देयर आर 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग टैग्स. वन बाय वन वी आर गोइंग टू यूज these 6 types. And what is the difference between these 6 types? With the help of output you can easily understand that what is the use of these types of tags. In your book also given H1 tag define the heading tags, largest heading, and H6 define the smallest heading. जो H1 है वो largest heading है और H6 है वो smallest heading है. For example, how we are going to use? First I have written this one and then I am going to start our heading tag 1. आपका हेडिंग टैग क्या है? H, और उसमें हम दे रहे हैं जैसे विच हेडिंग टैग आई एम गोइंग टू यूज H1 मीन्स दिस वन इज योर आवर लार्जेस्ट heading tag. And one more thing, if you have opened H1 tag then you have to close that tag also. Then after H2, then at last it should be closed also. In same way, we are having 6 types of heading tag and I am going to use these 6 types of heading tags. You have to open it also and you have to close it also. अगर आप close नहीं करोगे then it will not show you the output because this one is a container tag. That's why you have to use the closing also. You have to do the closing also of this tag. Okay, I have written 5 headings and now I am going to write our last heading tag. At 6 is the smallest heading tag. Okay, now what we are going to do after writing these types of headings, we have to save as, and where it should be saved in documents and with what name. Suppose I am going to write today I am going to write my name Preeti, and it should be
saved with dot html and save. And now I want to see the output of this. Then how we can see in documents? This one is in documents. Here please search where Preeti is written. Yes, this one PRITI लिखा था. Open with, you can use any web browser, it's totally depends on you. See the difference between this one. See बेटा, जो आपने टाइटल डाला था वो इसके टाइटल में आएगा. एंड दीज आर द आउटपुट्स, मीन्स जो हमने H6 यूज करे थे वो हमारे यहाँ पे आ गई हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट. ओके, you can see the output with the help of Google Chrome also. First I have used Internet Explorer, now I am going to use Google Chrome. See beta, this one is your title, heading tags and these are the tags. See beta, जो ये 6 types हैं, ये 6, ये आपकी एक sequence में है, means H1 is the largest and H6 is the largest. Then what is this? ये हमारा ऐसे अलग से क्यों आया? Because here I didn't used any type of tag, any type of heading tag. यहाँ पे मैंने कोई भी heading tag use नहीं किया है. That's why it shows you the result like this. Okay, this one is about our heading tag, that how we can use our heading tags. ये हमें किस लिए यूज होता है? हम अपने हेडिंग डालना चाहते हैं, उस लिए हमारे ये यूज होता है. नाउ चेंज द हेडिंग. हेडिंग्स हैं, सपोज सी बेटा, जो ये आउटपुट है ये आपका लेफ्ट एंड राइट साइड में है. नाउ यू वांट टू शो see the output in center. Then what we are going to do after heading, we have to apply center also. जैसे हमारा heading tag यूज हुआ, हमने यहाँ पे center tag यूज कर लिया, और we have to close this tag also because this one is your closing tag. Okay, now save it, Ctrl+S. How you can see the output? Documents and Preeti's, where is Preeti's written with this one? Right click, open with Google Chrome. अभी तो कुछ हुआ ही नहीं. Why it shows? Because there is a problem in our, yes, problem कहाँ है? जो हमने write down करे हैं, we are having some problems in that. अब हमने क्या करना है? We have closed our notepad also. Open with notepad. अगर आपके पास, yes, if you are having your your file, अगर आपके पास फाइल है बट आपने notepad closed कर दिया, that what should you do? You have to click open with, and your last second option is here, notepad. You can open with that notepad, but on your page number 110 also given that how you can use the center tag. आपने center कैसे use करना है, आप वो use कर लोगे. There is a means जो हमारा tags है, that format is not correct, that's why we have to use like this. Save it, and now we can see the output. Right click, open with Google Chrome. See बेटा, हमने फर्स्ट हेडिंग में सेंटर यूज किया है, एंड दिस वन इज द आउटपुट, मीन्स हमारी फर्स्ट हेडिंग क्या आ गई है, सेंटर में आ गई. बेटा आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेटिंग टेक्स्ट. How we can format our text? For example, we want to do our text bold, italic and underline also. How we can apply? For bold, B tag will be used, and for italic, I, and for underline, U. For example, जो भी आप वहाँ पे shortcut, MS Word में जो आप shortcut use करते थे, for bold Ctrl+B, for underline Ctrl+U, and for italic with help of I. In same way here, we can use that tags. H2 means for जो second heading tag है, I am going to apply here bold tag. This one is also closing container tag, that's why we have to close that tag also. Okay, and in third heading I am going to apply italic, and we have to close this one also because this one is also our container tag. बेटा जो container tag हैं वो आपको क्या है, क्लोज भी करने होंगे. विदाउट क्लोजिंग दैट टैग यू कांट सी द आउटपुट ऑफ दिस
tags. By using Control plus S, we can save it. And now how we can see the output? Where is our output? In this PC, right click, open with Google Chrome. This one is the output. बेटा देखो, this one is your bold, ये आपका bold में है, ये, और ये आपका किस में है? Italic में, and this one is your underline. In this way, you can use that how you can see the formatting text. जो आपने text format करे हैं वो आप कैसे देख सकते हो, वो आप by using in these types of tags you can see the formatting text and output of these tags. Now beta, on your next page, page number 112, strike, subscript and superscripts are given. Beta, first try yourself. These three tags आपको खुद से try करने हैं. I'm going to show you that सबस्क्रिप्ट क्या होता है, आप मैथ्स में यूज करते हो. फॉर पावर लगाते हो मीन्स वो सुपरस्क्रिप्ट हो गया, ऊपर यूज कर रहे हो. सुपरमैन ऊपर जाता है ना, जो हम पावर लगाते हैं, लाइक 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, जो भी हम ऊपर पावर लगाते हैं दैट इज कॉल्ड योर सुपरस्क्रिप्ट. एंड जो हम नीचे लिखते हैं लाइक CO2, साइंस में आप क्या लिखते हो? CO2 ऑन द बेस ऑफ O आप लिखते हो 2. That thing, if you want to write in your HTML tag, then with the help of superscript or subscript tag, you can write these things. Okay, and first you have to try yourself. Then in next class, I will show you that how you can see the output of these tags and by using practical. Thank you.